So welcome back everyone. Now we will discuss some of the important acts and policies in terms of environment and ecology. So let's start with the constitutional provisions itself. So there are some explicit constitutional provisions related to environment in India. First is Article 48A. Article 48A is DPSP, Directive Principle of State Policy. So in this DPSP, this is a instruction to a state. It is an instruction to the state. What is the instruction? That the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So क्या है? State shall endeavor, first है to protect and improve the environment, and second है to safeguard the forest and wildlife. ठीक है? This is Article 48A. Then there is Article 51A(G). This is a fundamental duty. So fundamental duty is a duty of citizen. याद रखना, this is the difference. This is the instruction to the state. This is the instruction to the citizen. क्या instruction है? First है to protect and improve the natural environment, and second है to have compassion for living creatures. ठीक है? So याद रखना ये दोनों चीजें एग्जाम में सिंपल दे सकता है कि which of the following are the constitutional provision related to environment, और यहाँ पे लिस्ट दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A आर द प्रोविजंस. अभी एक चीज याद रखना है, हाउ टू, ये दोनों सेम ही दिख रहा है. देखो, इंडेवर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, राइट, सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ की बात की गई है. तो इट गेट कंफ्यूज कि कौन सा क्या है. तो याद रखना यहाँ पे टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स. सो कंपैशन, हु कैन हैव द कंपैशन? स्टेट थोड़ी कंपैशन होगा ना. कंपैशन पीपल विल हैव द कंपैशन, सिटीजंस विल हैव द कंपैशन. सो देयरफॉर जिसमें कंपैशन की बात की गई है वो आर्टिकल 51G है, एंड जो बचता है वो आर्टिकल 48 है. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स. यू डोंट हैव टू रट्टिफाई, रट्टा नहीं मारना है आपको ये. ठीक है? आर्टिकल नंबर्स याद रखने. इन मेंस यू कैन यूज आर्टिकल नंबर्स. इन मेंस यू कैन राइट Article 48A and Article 51A of Indian Constitution have the provisions related to the environmental protection. ठीक है? You don't have to explain the provisions in detail. You can just mention the article number in mains. Prelims के लिए आपको बस identify करना in case there is a question. Apart from that, Article 21 of the Indian Constitution assures the citizen of India the right to healthy environment. You know that Article 21 is subject to interpretation. Article 21 क्या है? Article 21 is right to life. एंड यू नो दैट व्हाट फॉल्स अंडर राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या फॉल करता है, इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से डिसाइड हुई है. लक्ष्मीकांत में भी आप देखोगे तो एक बड़ी लिस्ट दी गई है. तो उसी में एक फैसेट आता है, दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. सो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट इज द फंडामेंटल राइट विच स्टेम्स फ्रॉम द एमसी मेहता केस. एमसी मेहता केस करके केस हुई थी. आई विल नॉट टीच इट हियर इन डिटेल, आप एक बार खुद से पढ़ लेना. वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर बोथ एनवायरमेंट एंड पॉलिटी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट केस है. तो एक बार ये केस आप रिवाइज कर लेना. कुछ मतलब पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, एक बार खुद से गूगल पे जाके पढ़ लेना. बेसिक चीजें, नॉट इन डिटेल, जस्ट एमसी मेहता केस फॉर यूपीएससी सर्च करिए, आपको मिल जाएगी कोई ना कोई आर्टिकल, वो एक बार पढ़ लेना. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980. 1980 में एनवायरमेंट के लिए डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया, and later in 1985 this department was upgraded to the separate ministry, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. अभी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का ऑफिशियल नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरा नाम है. ठीक है? नेक्स्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क एक्ट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है. दिस वाज पास इन आफ्टरमैथ ऑफ द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी. So 1984 में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी करके एक एक्सीडेंट हुआ था. इट वाज अ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन द कंपनी नेम यूनियन कार्बाइड. सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज यूनियन कार्बाइड. फ्रॉम दिस यूनियन कार्बाइड कंपनी सम पॉइजनस गैस वाज लीक्ड. उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड. सो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक पॉइजनस गैस इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हो गया, एंड इट किल्ड लॉट ऑफ पीपल इन भोपाल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर डिसेबल्ड. मतलब उनके अभी नेक्स्ट जनरेशन भी डिसेबल्ड कुछ केसेस में हो रहे हैं. तो दैट इज हाउ डेंजरस द मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज. राइट? आपको पता नहीं तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेना. वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट दैट हैपेंड इन इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. ठीक है? भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी was a wake up call for Indian government that we need to do something to ensure that such kind of accidents doesn't happen again. We need to ensure that the environment is taken care of. No one should be able to
pollute it this way. It is a kind of pollution, na. Industry coming and industry was able to not able to, actually the industry was responsible for such kind of hazardous gas to be leaked into the environment, and there was no law in place. The problematic factor was that there was no law in place to control the hazardous substance like methyl isocyanide. Therefore 1984 Bhopal gas tragedy was a wake-up call, and based on in aftermath math of that, government sat, a lot of committees were formed, and ultimately Environment Protection Act 1986 was signed to ensure that the environment is protected in a better way. Okay? So this is the umbrella legislation for the environment in India. It means that different environmental issues falls under Environmental Protection Act. It can be hazardous substances, it can be pollution, it can be many other facets related to the environment which are there under Environment Protection Act. Okay? It empowers the central government to take measures. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए क्योंकि इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. देखो इतनी ओपन एंडेड लैंग्वेज है. इट गिव्स ऑल द पावर्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. अभी इट इज अ ओपन एंडेड पावर. गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग टू protect and improve the environment. Therefore it is a very powerful act. And preventing and controlling, abating environment pollution. So quality of environment improve करना है and pollution कम करना है. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दी गई है. इट ऑल्सो एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे देखिए हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा. सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू सेंटर. याद रखना है ये चीज. ठीक है. It empowers central government to establish authorities charged with the mandate of preventing environmental pollution. So it empowers central government to establish some authorities. For example, central groundwater authority is established under the provisions of Environment Protection Act. So this is a statutory body. ठीक है. तो यहाँ पे एक प्रोविजन है which empowers central government to establish authorities for preventing environmental pollution. Already CPCB एक authority है, CPCB and State Pollution Control Board. Apart from that, सीपीसीबी एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड तो हमें पता है एयर पोल्यूशन एक्ट एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर बनती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर कैन बी सम बॉडीज टू prevent environmental pollution which can be formed under the Environment Protection Act. The act implement the decision made at the Stockholm Conference. Very, very important. There was a conference in Stockholm. It is one of the most landmark conference in terms of environment. हम कल के लेक्चर में इसे देखने वाले, tomorrow's lecture. Don't worry about that. In this conference कुछ decision लिए गए थे for the protection of environment at international level. It was the first international summit for protection of environment. To implement the provisions of that Stockholm conference, an act was made in India which was Environment Protection Act. याद रखना, मैंने पीछे भी आपको बोला था कि whenever there is a international agreement, कोई international agreement होता है तो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है किसी कंट्री पे. फॉर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री. हम सार्वभौम देश है. इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री. A body like UN, yeah, a body which is even if it is a international body, cannot just say something to India and India have to follow it. Not like that. India have to follow it based on Indian laws. तो इसके लिए क्या होता है? Whenever there is international agreement, अगर इंडिया उसे एग्री करता है, इंडिया रेटिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, देयर आर टू वर्ड्स आपने सुना होगा, इंडिया साइंड एग्रीमेंट एंड इंडिया रेटिफाइड द एग्रीमेंट. तो साइन करता है मतलब क्या? इंडिया एग्रीज की ये एग्रीमेंट हम फॉलो करेंगे. रेटिफाई करता है मतलब क्या? इंडिया मेक्स सम प्रोविजंस इन इंडियन लॉज टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ दैट इंटरनेशनल एग्रीमेंट. दैट इज कॉल्ड एज रेटिफिकेशन. ठीक है. सो basically Environment Protection Act 1986 was passed to ratify the Stockholm Conference objectives. Got it? It is enacted under Article 253 of the Indian Constitution. याद रखना, Article 253 of the Indian Constitution क्या कहता है? Whenever there is an international agreement, if we want to implement that agreement in India, there needs to be some law under Article 253. ठीक है. आर्टिकल 253 के अंडर. देयरफॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दो तरीके से ऑब्जेक्टिव आप याद रखना. एक तो था या फिर बैकग्राउंड याद रखना. एक बैकग्राउंड है भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 एंड दूसरा बैकग्राउंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस मेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस व्हिच वेर इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल 253. देयरफॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत बनाए? अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The act empowers the center to take all such measures as deemed necessary. Therefore, it is a very powerful act. It empowers all measures that is necessary for protection of environment. Very open-ended and wide power are given under Environment Protection Act to the government. Chalo, let's move ahead. What are other provisions of Environment Protection Act?
it established the framework for studying, planning and implementing long term requirement for environmental safety. Environmental safety की बात यहाँ पे की गई है, and laying down systems of speedy and adequate response to the situation threatening the environment. Whenever there is some climate related disaster या climate related emergency, then Environment Protection Act provides or have the provisions for the response to such situations. ठीक है, so these are the official language. See, ये मैंने इसलिए दिया है आपको कि अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो कॉमन सेंस लगाना है. ये अगर ऐसा स्टेटमेंट लिख के आया है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में देयर कैन बी अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडीइंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, यस हो सकता है. देयर कैन बी अ adequate response situation threatening environment, yes हो सकता है. इट इज वेरी जेनेरिक, इसे बोलते हैं जेनेरिक स्टेटमेंट्स, जेनेरिक स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो आपको अगर पता भी नहीं तो अज्यूम करके चलो कि ये स्टेटमेंट सही है. इसमें गलत होने जैसा क्या है, राइट ना. सो जेनरिक स्टेटमेंट अगर पूछती है यूपीएससी तो जनरली वो एज इट इज कॉपी पेस्ट किए होते हैं कहीं से. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सच स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट. देयरफॉर एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है. Next, there is a restriction on pollution discharge. How much pollution you can discharge? There is a restriction on that. The act is one of the most comprehensive legislations with a pretext to protection and improvement of the environment. I already told you. It is most important and comprehensive. It covers all the issues. It covers pollution. It covers hazardous substance. It covers environmental planning. It covers safety. It covers response to the emergency situations. So a lot of different aspects of environment are covered comprehensively in this act. That prescribes the special procedures for handling hazardous substance. Very very important. So if you want to handle any hazardous substance in India, जैसे methyl isocyanate था in case of the Bhopal gas tragedy. So now if you want to do anything related to hazardous substance in India, you have a special procedures that needs to be followed under Environment Protection Act. वो procedures follow नहीं किए तो you cannot handle such substances in India, या फिर आपके against there can be a strict action. इट रिलाइज द रूल ऑफ लोकस स्टैंडी. लोकस स्टैंडी मतलब क्या, इंडिया में एक रूल है कि इफ देयर इज अ केस गोइंग ऑन देन द पार्टी टू द केस मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट. मतलब क्या, लेट्स से देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन ए एंड पर्सन बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है, दे गो टू द कोर्ट, सो दे नीड टू बी प्रेजेंट देयर. अगर मैं रास्ते पे खड़ा हूँ, दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं, तो आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट filing complaint against one of those person, because I am not party to that dispute. Only the people who are party to the dispute are able to go to the court. However, in Environment Protection Act, the rule of locus standi is relaxed. What it means? It means that, let's say, here is a river, for example. Here is a company which is doing a pollution. एक company यहाँ पे pollution दे रही है. ये river है, let's say in UP. ये river UP में, for example. This company is leading to pollution. ड्यू टू दिस, यहाँ पे कुछ विलेजर्स है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इनको पानी पीने को नहीं मिल रहा है, दे आर हैविंग लॉट ऑफ डिसीजेस एंड ऑल. नाउ लोकस स्टैंडी का रूल कहता है कि अगर इस कंपनी के अगेंस्ट आपको केस करनी है तो ओनली दिस विलेजर्स कैन डू द कंप्लेंट, नो वन एल्स कैन. बट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिस रूल इज रिलैक्स्ड. एनीवन, इवन मी, आई एम इन महाराष्ट्र राइट नाउ, आई कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट दिस कंपनी. It is called as relaxation of rule of locus standi. Even if I am not party to the dispute, I am not party to, मेरा कुछ संबंध ही नहीं उस जगह से, right? I am not party to the dispute, still I can go to the court. It is called as relaxation of the rule of locus standi. Next है, under the act there will be supremacy of the provisions. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. Supremacy of the provisions मतलब क्या? If there are conflict between this act and any other act in India, then Environment Protection Act is considered as supreme. How? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था आपको कि प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल अबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है. बट इफ यू नो, सीपीसीबी का भी यही काम है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी क्या कर रहा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहा है, राइट? सो बोथ हैव द सिमिलर पावर्स. नाउ लेट्स से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ रैंडम. लेट्स से देयर आर टू एक्ट्स, एक्ट ए एंड एक्ट बी. लेट्स से एक्ट ए सेज कोई ऑफेंस है, लेट्स से थेफ्ट है, theft. Let's say Act A says कि theft up to 1,000 rupees, will have jail of 7 days, for example. ऐसा एक लॉ है. एंड दूसरा एक लॉ है जिसमें लिखा है कि theft up to 1,000 rupees will have a jail of 14 days. Now there is a person who is caught and उसने 1,000 से कम की, लेट्स से 900 रुपए की theft की है, फॉर एग्जाम्पल. नाउ उसको 7 days जेल होगी या 14 days होगी, क्या होगा दोनों में से, राइट? द आंसर इज जो भी लॉ सुप्रीम होगा वो होगा. लेट्स से देयर इज रिटर्न लॉ ए में लिखा है, फॉर एग्जांपल,
कि लॉ ए विल बी सुप्रीम, विल हैव अ सुप्रीमेसी प्रोविजन, इट मींस दैट कि इसमें 7 दिन लिखा है तो 7 ही दिन होगा, बाकी किसी में कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर, दिस विल बी फॉलोड। गॉट इट? सिमिलरली देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीए बोलते हैं, 1986। इट मींस दैट if there is a conflict between any provisions of environment protection act and some other law, then which law will be considered valid? It is the EPA 1986 provision that will be considered as valid. Got it? There are different powers which are given to the central government under the EPA. What are these powers? So let's discuss some of the powers that are given to the central government under Environment Protection Act. First is coordination of action by the states. So कॉमन सेंस की चीजें याद रखना, क्या है? कोऑर्डिनेशन। क्या क्या पावर्स है? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, लेइंग डाउन एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्लेसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर किसी भी सिटीज में एमआईडीसी एरियाज होते हैं, राइट ना, सो इंडस्ट्रीज आर जनरली इन एमआईडीसी एरियाज। यू वोंट फाइंड इंडस्ट्रीज इन द एरियाज वेयर देयर आर सिटीजन, जो जनरली सोसाइटीज वगैरह होते हैं वहां पे आपको इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रीज एक सेपरेट सिटी के आउटसाइड या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में होती है, राइट। सो सच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज का लोकेशन पे एक रेस्ट्रिक्शन है, आप कहीं पे भी जाके इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है authorities to issue direct orders including orders to close, prohibit or regulate any industry. So it have the authority to issue orders, right, including order to close, prohibit or it can regulate any industry with respect to environmental dimensions, ठीक है। power of entry of examination, testing of equipment and other purposes, मतलब क्या? इट कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस, किसी भी, आपको सी एक सिंपल चीज याद रखना, इंडिया में कुछ भी चीज विदाउट लॉ नहीं होती है, हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग होनी होती है। तो लेट्स से इफ अ ऑफिसर, एक ऑफिसर है, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉर एग्जांपल, उसे एक इंडस्ट्री इंस्पेक्ट करनी है कि जहाँ पे उसे लग रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, सो दैट पर्सन वांट टू गो एंड एग्जामिन कि वहां से पोल्यूशन लिमिट में हो रहा है या दे आर फॉलोइंग द लॉज और नॉट। सो इट कैन गो ओनली इफ इट हैज लीगल बैकिंग, so that legal backing is here in Environment Protection Act. Here there is a power of examination, testing of equipments and other purposes, right? एक वारंट लेके जाना होता है ना, आपने सुना है ना, वारंट लेके जाते हैं, अगर आपका किसी का घर सर्च करना है फॉर एग्जांपल, पुलिस है तो पुलिस को वारंट लगता है फॉर सर्चिंग दैट होम, राइट। सिमिलरली Environment Protection Act provides this warrant in terms of examination, testing of equipment and other purposes of an industry. It have power to analyze sample of air, water, soil or any other substance from any place, right? आप बिना लॉ कुछ कर ही नहीं सकते। लेट्स से किसी रिवर में पोल्यूशन हो रहा है, आपको चेक करना है कि सच में पोल्यूशन हो रहा है क्या, कौन सा पोल्यूटेंट है, एज अ अथॉरिटी यू कैन नॉट डू अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ लीगल बैकिंग, दैट लीगल बैकिंग इज प्रोवाइडेड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे देखो अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्ट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स या पावर ऑफ एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऑल किसको है, हु हैव दिस पावर्स? These powers have to the relevant authorities, relevant authorities. It can be district magistrate, it can be forest officer or someone, right? So this is having the powers to the relevant authorities, those are the government, right? Government को power है basically सब करने की। लेकिन Environment Protection Act also have a provision of citizen suit. It means that any person in addition to the government official may file a complaint in court alleging offenses under the act. मतलब क्या, कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके अगर कोई ऑफेंस है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मतलब क्या, देखो हियर इज द इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज डूइंग पोल्यूशन, you as a citizen can go in court and file a case against this industry for doing pollution. This is called as citizen suit provision. जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली लॉज में क्या होता है कि अगर कोई मतलब पब्लिक जो ऑफेंस होते हैं पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर द अथॉरिटी हु कैन फाइल द कंप्लेंट, राइट। जैसे इवन चोरी होती है तो चोरी की कंप्लेंट कौन फाइल करता है, मतलब एक्चुअल में दीज आर द पुलिस ऑफिशियल्स हु आर डूइंग इट, राइट, yes or no? But in case of Environment Protection Act there is a citizen suit provision where any person can file the complaint in court alleging an offense under this act. अगर इस एक्ट के Environment Protection Act के कोई प्रोविजन फुलफिल नहीं कर रही कोई इंडस्ट्री, तो एनी पर्सन, इंडस्ट्री तो जा, सॉरी ऑथोराइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो जा ही सकते हैं, इसमें नॉट अ बिग डील, बट एनी पर्सन कैन ऑल्सो गो, दिस इज कॉल्ड एज सिटीजन सूट प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोविड्स प्रोविजंस फॉर पेनल्टीज। मतलब क्या, अगर आपको ये इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है, इस इंडस्ट्री को आपको फाइन लगाना है, तो किस एक्ट के तहत लगेगा, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसमें दिए लिस्ट दिए कि किस ऑफिस को कितना फाइन लगेगा,
We don't need to know that detail. You just need to know the penalties are provided in this act. Okay. Then there is the provisions of eco-sensitive zones. What are eco-sensitive zones? Eco-sensitive zones are the areas which are defined around the national park and wildlife sanctuary. Do you remember national park के around क्या होता है? Around the national park, let's say this is a national park, some area around this national park is declared as eco-sensitive zone. Why? Because if there are some, those can negatively impact the national park. यहाँ की जो activities हैं, ये activity national park को negatively impact कर सकती है. ठीक है ना? Therefore, the area around national park are declared as eco-sensitive zone. हमने कल के लेक्चर में देखा था eco-sensitive zone, right? It is the ecological fragile area notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Environment Protection Act. कल के लेक्चर में भी देखा था eco-sensitive zone are declared under Environment Protection Act. There can be a 10 kilometer buffer zone around the protected areas. जैसे national park है, national park के around 10 kilometer का buffer zone हो सकता है, which is called as eco-sensitive zone. ठीक है? There are some statutory bodies which are formed under EPA. Example is Genetic Engineering Appraisal Committee and National Coastal Zone Management Authority. Latter, this body is converted into National Ganga Council under Ministry of Jal Shakti. Both of these bodies are basically statutory bodies because they are formed under a law. ठीक है, ये law के अंडर फॉर्म हुई है, इसलिए this is a statutory body. So let's discuss Genetic Engineering Appraisal Committee. So Genetic Engineering Appraisal Committee is responsible for appraisal of activities. Appraisal means basically an analysis या फिर it is overlooking the activities which involve large scale use of hazardous microorganisms and recombinants in research and industrial production from the environment angle. You know that there is something called as biotechnology. So biotechnology में क्या हो रहा है? We are modifying the organism, genetic engineering कर रहे हैं, genetically we are doing some research. So for these activities, the activities are basically appraised, या फिर जिसे appraisal का एक another word है, let me just assessment. Appraisal को बोलते हैं assessment भी, ठीक है ना? So basically what we are doing, we are assessing the activities which are related to the biotechnology in this GEAC. GEAC is responsible for assessing the biotechnology related developments happening in country. It also assesses the proposals relating to the release of genetically engineered organisms into environment, including field trials. आपको पता है अभी बीटी ब्रिंजल की ये चल रहा है, बीटी ब्रिंजल पे रिसर्च चल रहा है. दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, ब्रिंजल ही है लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस उसमें किए गए हैं. नाउ इफ यू वांट टू टेस्ट दिस बीटी ब्रिंजल, आपको एक जगह पे इसकी फील्ड ट्रायल लेनी है. एक खेती में 1 किलोमीटर है, 1 एकड़ की एक आपकी खेती है, आपको यहाँ पे बीटी ब्रिंजल शो करके देखना है. Now you will need permission of the Genetic Engineering Appraisal Committee first. Why? Because this BT brinjal can be very harmful for the environment. आप ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर बीटी ब्रिंजल डाल दिया एंड कल पता चला कि भाई उतना पावरफुल था कि उसने पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दी. पूरे इंडिया में ब्रिंजल ही दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? सारी इकोसिस्टम वाइप आउट हो गई जैसे इन्वेजिव स्पीसीज करता है. such kind of things can happen. Therefore, to ensure that such kind of hazards are not there due to the biotechnology, this genetic engineering appraisal committee is formed. ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज अपेक्स बॉडी दैट अलाउज कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स. अगर आपको जीएम क्रॉप्स को कमर्शियली रिलीज करना है, देन ऑल्सो यू नीड परमिशन फ्रॉम द जीईएसी. जैसे कि इंडिया में यू नो दैट बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप विच इज अलाउड, राइट? बीटी कॉटन अलाउड है इंडिया में. इसे अलाउ किसने किया है? बाय ये जीईएसी ने. अभी बीटी ब्रिंजल की हमने बात की. इफ यू वांट टू कमर्शियली बीटी ब्रिंजल की सीड्स आपको बेचने मार्केट में, तो you will have to take the permission of Genetic Engineering Appraisal Committee first. Also, approval of proposals involving use of living modified organisms. Modified organisms means any organism in which there is some genetic modification is done is called as living modified organisms. It can be plants, it can be bacteria, it can be fungus, it can be any other organism in which there is some modification done. For this, there is also one international protocol which is called as Cartagena Protocol. याद रखना. So if you want to have any proposal which involves living modified organisms, its approval is from the Genetic Engineering Appraisal Committee. So this is one of the most important body under Environment Protection Act. याद रखना है. Now we will discuss these pollution related laws. There are two important laws related to pollution. First is Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Very very important. Its objective क्या था? Its objective was to control water pollution in simple language.
यहाँ पे दिया है मॉनिटरिंग, रिस्टोरिंग होलसमनेस, प्योरिटी ऑफ वाटर वगैरह वगैरह. इन सिंपल टर्म्स वाटर पोल्यूशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. There are two regulatory bodies which are formed under the Water Pollution Act. What are those? Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. Both of these are the statutory bodies as they are formed under the Water Pollution Act. ये दोनों बॉडीज हमने डिटेल में देखी थी. पोल्यूशन जब पढ़ा था तब ये दो बॉडी हमने डिटेल में डिस्कस की है. इसलिए यहाँ पे जैसे हमने जीईएसी डिस्कस किया वैसे नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. एक बात सिर्फ रिवाइज कराता हूँ आपको कि सीपीसीबीज आर फॉर सेंटर, state pollution are for the states, but for union territories there are no separate state pollution control board. For union territories, this central pollution control board itself acts as a state board. Let's move ahead then. Next is Air Pollution Prevention and Control of Pollution Act 1981. Its objective is to prevent, control and abatement of air pollution control करना. Again there are two regulatory bodies which are under Air Pollution Act. आपको पता है CPCB and SPCB, State Pollution Control Board. These were formed in 1974 under Water Pollution Act. Later, in 1981, the power of these bodies was from 1974 to 1981. इसकी पावर थी वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड. इन 1981 एयर पोल्यूशन के रिलेटेड पावर्स भी इसको दे दी गई, इसी इन्हीं बॉडीज को. ठीक है, अंडर द वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981. So that is why these regulatory bodies are there. So these bodies derive its power from two different acts. One is Air Pollution Act and one is Water Pollution Act. ठीक है, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन दोनों एक्ट्स के तहत these bodies derive their power. Sources of air pollution are not permitted to release. See, for any industry there are some predetermined limit. किसी भी इंडस्ट्री को एक लिमिट है कि आप इस लिमिट तक पोल्यूशन कर सकते हैं. जैसे पीयूसी होता है, आपकी गाड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, पीयूसी होता है पोल्यूशन अंडर चेक, राइट, या पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. तो पीयूसी में क्या होता है, एवरी व्हीकल इज इमिटिंग सम गैस, राइट, एमिशंस आप कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक आप करते तो आपका अलाउड है, राइट. सिमिलरली इंडस्ट्रीज आल्सो हैव सम लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट इफ दे आर रिलीजिंग द पोल्यूटेंट इट इज अलाउड. जैसे पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन है, लीड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर ये पर्टिकुलर लिमिट तक है तो ये अलाउड है, उसके अबव नहीं अलाउड. सो ये लिमिट कहाँ पे दी गई है? दिस लिमिट्स आर गिवन इन एयर पोल्यूशन एक्ट. नेक्स्टली इन 1987 में एयर पोल्यूशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट के बाद अ प्रोविजन ऑफ सिटीजन सूट्स वाज इंक्लूडेड इन द एयर एक्ट एंड एक्सटेंडेड द एक्ट टू इंक्लूड द नॉइज पोल्यूशन. सो यहाँ पे सिटीजन सूट की प्रोविजन ऐड हुई. सिटीजन सूट्स की क्या प्रोविजन है कि इवन अ सिटीजन कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडस्ट्री अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सिटीजन सूट प्रोविजन. एंड सेकंड एक चीज ऐड हुई, दो चीजें हुई 1987 के अमेंडमेंट में. पहली है सिटीजन सूट की प्रोविजन ऐड हुई, एंड दूसरी है इट एक्सटेंडेड द एक्ट टू इंक्लूड द नॉइज पोल्यूशन. सो नॉइज पोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूशन. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. जो नॉइज पोल्यूशन है आपका, नॉइज पोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूशन अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट 1981. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट्स which are related to the forest, right? So for forest, the most important act to begin with is Indian Forest Act of 1927. From the year itself, it is clear that this is a British era act, right? British era act. So in British era, there were two acts which were passed in terms of Indian forest. So those were Indian Forest Acts of 1878 and 1927. These were the two acts. So the 1927 Act was largely based on the Indian Forest Act of 1878 only. This act was modified in 1927. So what was the objective of these two acts? Why British government felt the need of enacting the Forest Act in India? See, both these acts sought to consolidate and reserve the areas having forest cover, significant wildlife, etc. So if let's say there is an area, in this area, this is the area where there is a significant wildlife, this is the area where there is significant number of forests, right? So what they did, let's say these are the areas where there was wildlife and forest cover. So they just took this entire area and consolidated it to declare it as a reserve forest, right? Why? To regulate the movement and transit of forest produce. उनका objective economic था purely. Their objective was not environmental. Why? Because see,
forest is a source of lot of economic resources. It may be timber, it may be fruits, it may be flowers, right? Therefore, they wanted to regulate the movement of forest produce in the forest. What are the forest produce? It may include timber. Timber means this is a tree, right? ये ट्री है. ट्री का ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, दिस ट्रंक पार्ट इज कॉल्ड एज टिम्बर. And timber is one of the most important resources. Remember this, because timber is used in construction activities, timber is used in paper pulp activities, timber is used in so many places that you cannot imagine. Therefore, timber was one of the most important resource, and British government wanted to regulate the movement of the forest produce, including timber, and duty on the timber and other forest produce. What it means? Let's say you are a person who lives in this area, who are taking some forest produce and bringing it to the market for sale. That is your livelihood, right? Let's say for the tribal people. Now, this transit of produce was levied, duty levied. What it means by duty? Duty just means tax. So if you want to move a forest produce from a forest to the market, you would have to pay the tax to the government of India. And at that time, government of India was basically the British government. So that was the purpose of the forest Indian Forest Act of 1978 and 1927. क्या पहला था? Consolidating the reserve areas. Second था regulating the movement of the forest produce, and third था duty on timber and other forest produce. It also defines procedure to be followed for declaring an area to be reserve forest, protected forest, or village forest. What it means? I told you that this area can be declared as reserve forest. Now there must be some procedure. Randomly कोई भी area थोड़ी declare कर देंगे. So that procedure was also defined in the Indian Forest Act of 1927. It defines what is forest offense. What it means कि forest related क्या क्या offenses है, ये यहाँ पे first time define किए गए. What are the acts prohibited inside a reserved forest? आप reserved forest में क्या नहीं कर सकते? जैसे कि you cannot build house in reserved forest. Such kind of activities which were prohibited in this reserved forest were also mentioned in the Indian Forest Act of 1947. It also gives penalties leviable on violation of the provisions. Let's say any provisions of this act is violated, then what will be the penalty that was mentioned in this Indian Forest Act? See, ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना भी क्रूर रहे, क्रूअल रहे, एक बात हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में जाननी चाहिए कि दे वेयर अ लॉ अबाइडिंग पीपल, कि उनके राज में जो होता था वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता था. जैसे उनको टैक्स लेना है, वो लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स लेते थे. उनको अगर किसी को पनिश करना है, लॉ के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाती थी. So that is one thing that you must remember, that everything in British government happened according to the law, right? Those laws were very problematic. That is another concern. उन्होंने laws बहुत problematic create किए थे, that destroyed Indian economy, that destroyed Indian culture. That is a separate topic of discussion. But one thing is clear, that anything that was happening in British government at a government level, not at individual level, there might be some corrupt officer, corruption, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, वो अलग बात है. लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे जो चीजें हो रही है, वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रही है. तो इसीलिए जो भी पेनल्टीज हैं या फिर जो भी फॉरेस्ट ऑफेंसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में डिफाइन की गई थी. ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट thing related to the forest policy is in National Forest Policy of 1988. Very, 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 very important policy. Not only for prelims, in mains also you can use this policy. मेंस में आप बहुत सारे आंसर में इस पॉलिसी को मेंशन कर सकते हैं. इफ यू नो द प्रोविजंस ऑफ दिस पॉलिसी, दे कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर्स एज वेल. देयरफॉर ये पॉलिसी आपको अच्छे से करनी है. Its emphasis was on protection, conservation, regeneration and development of forest. So forest को protect करना, conservation करना, रीजनरेशन करना. अगर किसी जगह का फॉरेस्ट खराब मतलब डिग्रेड हुआ है तो उसको रीजनरेट करना. एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. डेवलपमेंट मींस नॉट ओनली जस्ट फॉरेस्ट, फिर वहां पे टूरिज्म डेवलप करना, वहां पे ट्राइबल लाइवलीहुड डेवलप करना, वहां पे फॉरेस्ट की जो वैरायटी है फ्लावर्स की, प्लांट्स की, वो बढ़ाना. ये सारी चीजें डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट में आएगी. What were the features of this forest policy? First is maintaining environmental stability through preservation and restoration of ecological balance. Very, very important keyword. Ecological balance. Ecological balance means balance in different activities related to ecology. So balancing your development with environmental sustainability, balancing your tribal livelihood with the environmental protection, all such kind of balance was required to be maintained in Indian forest policy.
conservation of forests as a national heritage with vast varieties of flora and fauna. So our forests are nothing but our national heritage. So they need to be conserved as a national heritage. Control of soil erosion and inundation in catchment areas of rivers, lakes, and reservoirs. So rivers, lakes, and reservoirs have a catchment area. Catchment area means the area from where the water is coming in this area. Let's say this is a river. So इस river में यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है. So all this area from where the water is coming to this river will be called as catchment area of this river. Geography की concept है. So this policy had a provision for controlling soil erosion and inundation in the catchment area of these water bodies. Next है check on the extension of sand dunes in desert areas of Rajasthan. So you know that there are something called as sand dunes found in the desert. Geography में आपने पढ़ा होगा. So this policy was giving guidelines regarding extension and check on the sand dunes. ठीक है. Increasing forest cover to 33% through massive afforestation and social forestry program. Very very important feature. याद रखना, हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया का टारगेट है 33% फॉरेस्ट कवर, बट कहाँ पे लिखा है? इट इज रिटन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. वेरी इंपॉर्टेंट. सी how to use this information in mains में there will not be a question write the features of national forest policy 1988 ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, but there can be a question regarding, let's say there can be a question regarding floods, right? In that you can write one of the solution to controlling flood is massive afforestation. As mentioned in national forest policy, India's aim is to increase its forest cover by 33%. So you are substantiating your argument with something which is written in a policy. Such kind of things can be done in answer writing. I have just given you one example. Each of these points can be used in different answers. Moving ahead, to meet needs of fuel wood, fodder, minor forest produce for the rural and tribal people. Very, very important. National forest policy not only talks about forest conservation, it also talks about the rural tribal people. Very important. ठीक है. नेक्स्ट है ऑगमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना. नेक्स्ट है efficient utilization of forest produce and optimum substitution of wood. So आप जो forest produce collect कर रहे हैं इसका utilization efficiently होना चाहिए. Let's say you are collecting wood from the forest, it needs to be used with the most efficient way possible. Second है substitution of wood. You know that wood is one of the most important source of fuel in rural India. Source of fuel, right? So they wanted to substitute the wood. Not only in fuel, actually, it is also used in paper industry. So paper mein, we know that we are focusing on recycling of the paper. Similarly, substitution of wood in terms of source of fuel, this can be connected to something called as Ujjwala scheme. What is the Ujjwala scheme? It is about providing LPG to the rural house, to the households with the low income criteria. Okay, so that is what we mean by substitution of wood. Next है steps to create massive movement of people. So basically involvement of people and even women to achieve the objectives of minimizing pressure on the existing forest. So this talks about the involvement of local people as well as women in protection of the forest. ठीक है. Next है involvement of people in forest management under joint forest management. Very very important. This policy have a concept of joint forest management, where there will be a forest management committee which will involve both government as well as local people. So we want to involve local people in the management of forest under joint forest management. So these are the important features of this policy. आपको सारे लर्न नहीं करने हैं, जस्ट रीड दिस अगेन एंड अगेन. क्या है ये देखो, जो कीवर्ड्स है वो पढ़िए. एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, नेशनल हेरिटेज, सॉइल इरोजन कंट्रोल करना, सैंड ड्यून्स कंट्रोल करना, 33% फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री, राइट. रूरल एंड ट्राइबल पीपल की भी राइट्स का ख्याल रखना, ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी. बस इतना ही. हाउ मच टाइम यू विल टेक टू रीड दिस पीपीटी अगेन लाइक दिस, जस्ट मैंने जैसे पढ़ के दिखाए. हार्डली 1 मिनट का काम है. तो इस तरीके से आपको इसको रिवाइज करते रहना है अगेन एंड अगेन. When you revise it again and again, you will be able to reproduce it in examination hall. May it be prelims, may it be mains. ठीक है. Moving ahead, next है Forest Right Act of 2006. Again, another very important legislation regarding to the forest. So this legislation is actually enacted to balance the right of environment with the right to life and livelihood. So this is the environment and this is the tribal people's life, right?
या फिर ट्राइबल या फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ। सो इनका बैलेंस करने के लिए ये एक्ट लाया गया था जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसका लॉन्ग फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नाम में ही है। पहली चीज है ये एक्ट किन के लिए लाया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, याद रखना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफआरए बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु हैव कंफ्यूजन दैट एफआरए इज फॉर ट्राइबल्स। यस, इट इज फॉर ट्राइबल्स, but it is also for the traditional forest dwellers who might be tribals, who might not be tribals. There are also non-tribal forest dwellers, means those people who dwell in forest but not tribals. Tribals नहीं है वो, ठीक है? So it is applicable to both tribals and non-tribal forest dwellers. Next है recognition. Recognition means to recognize the forest rights. These tribals and other traditional forest dwellers have some rights with respect to forest. They are recognized under this act. ठीक है, याद रखना है। नोडल एजेंसी फॉर एफआरए इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज हमें लगता है फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट इट मस्ट बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, but it is talking about forest rights of the tribals and other forest dwellers. Therefore, this act comes under Ministry of Tribal Affairs. Very important. What is the significance of this act? First is, first, why was the need of this act? This act was needed because right from the British era, when the Britishers start to control forest for their own economic benefit, right? After that, after independence, government of India started to regulate forests for the purpose of environmental protection. But problem in both of these policies was that the tribals were not considered. Why? See, tribals are living in this forest for thousands of years now. एंड सडनली यू केम एंड से दैट नहीं अभी आप यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं निकाल सकते, टिम्बर नहीं निकाल सकते, निकलोगे तो आपको आप पे लेवी लगेंगे इन द ब्रिटिश एरिया इरा। देन इन गवर्नमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यू वेर नॉट अलाउड टू मूव एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यू वेर पनिश्ड सिवियरली, क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गए थे आप ट्राइबल्स को, राइट? देयरफॉर ट्राइबल लाइव्स वेर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू दिस ओवर रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अच्छा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने, बट नाउ सडनली जो ट्राइबल वहां पे 10,000 साल से कोई चीज कर रहा है, आप सडनली आके बोल रहे कि आप ये नहीं कर सकते, देन ऑब्वियसली द ट्राइबल पीपल फेल्ट थ्रेटन्ड। उनके राइट्स वहां पे है, उन्होंने वो सालों से उनकी कस्टम्स है, आप सडनली बोल रहे कि वो चीज नहीं कर सकते। देयरफॉर टू बैलेंस, काउंटर बैलेंस this particular problem, forest right act was enacted in 2006, right? What is significance of it? FRA recognizes and secures community rights in additional to the individual rights. See, FRA के पहले भी कुछ individual rights recognize किए गए थे। एग्जांपल क्या? Let's say this is a forest, in this forest there is this village, right? In this village there are people living, so in people के कुछ individual rights है। मतलब क्या? Let's say here a person A lives and एक ही एक जमीन है, this is the land of person A, so the person A's right on this land was recognized, individual right recognize किए गए थे FRA के पहले भी, but FRA additionally secured the community rights as well। मतलब क्या? जनरली आपने देखा होगा whenever there is a village there are some common places, not only village, cities में भी होते हैं common places, cities में भी होते हैं जैसे gardens होते हैं, right? There are roads, these are the common places, lakes, so there can be a common place। let's say this is a village A, in this village A there is a, अभी ये लैंड है, इसका इस पर्सन ए का इस लैंड पे आपने राइट रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन यहाँ पे एक लेक था, दिस लेक इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द ट्राइबल पीपल फॉर सेंचुरीज। नाउ इस लेक पे आप उनको कम्युनिटी राइट नहीं दे रहे थे, दिस लेक वाज नॉट कंसिडर्ड एज द ओनरशिप ऑफ दिस ट्राइबल पीपल, देयरफॉर FRA recognized and secured community rights in addition to the individual rights, community rights on the common places, generally lakes, then there can be some grounds, etc. Right of ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce, very very important। FRA का सबसे important feature है कि it gave right to collect, own and dispose minor forest produce। what is minor forest produce? Let's understand this first। see, this is a tree, एक ट्री है, इस ट्री का ये टिम्बर है, इफ यू कट दिस पार्ट देन दिस ट्री विल die, right? but let's say if you collect the fruits, if you collect the fruits, if you collect the leaves, if you collect the gum, right? if you collect the honey, will this forest or will this tree die? Obviously not। so these products which are derived from the forest but doesn't threaten
the forests are called as minor forest produce. These are also called as non-timber forest produce. Non-timber forest produce. Why non-timber forest produce? Because I already told you. Let's say this is a tree. This is a tree. इस ट्री का ये जो ट्रंक पार्ट है, ये ट्रंक पार्ट छोड़ के बाकी जो चीजें है उसे हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो ऑब्वियसली दिस इज द टिम्बर. सो टिम्बर छोड़ के बाकी, सो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. टिम्बर छोड़ के बाकी जो पार्ट्स है, दोज आर अंडर द minor forest produce, right? So a tribal person is able to own, access to collection, use and dispose. So this person can collect, let's say honeybees, let's say wood from this forest and sell it in the market, और यूज इट फॉर सेल्फ कंजम्पशन. दोनों भी चीजें कर सकते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं. दिस राइट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो व्हाट आर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन. इसमें क्या क्या आता है? बाम्बू, वेरी इंपॉर्टेंट. बाम्बू इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्री. बाम्बू क्या है? बाम्बू इज अ ग्रास. ठीक है. सो बाम्बू कैन बी कलेक्टेड. Brushwood can be collected. Stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu, kendu, leaves, medicinal plants, herbs, roots, tubers, etc. are the examples of minor forest produce. आपको ये सारे गूगल कर लेने. गूगल ऑल दिस और इसके इमेजेस देख लीजिए तो आपको याद रहेगा. आपको शायद पता नहीं व्हाट इज तुषार, व्हाट इज केन. सो जस्ट गूगल लिस्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विद इमेजेस, या फिर जस्ट सर्च दिस तुषार क्या होता है, कोकून्स क्या होता है, एंड यू विल सी द इमेजेस एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है. गूगल कर लेने एक बार. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेजेस, ओल्ड हैबिटेशन, अनसर्वेड विलेजेस एंड अदर विलेजेस इनटू रेवेन्यू विलेजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से दिस इज अ फॉरेस्ट. इन दिस फॉरेस्ट देयर आर ट्राइबल पीपल लिविंग इन ग्रुप्स. लेट्स से यहाँ पे कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं. ठीक है. बट दिस फॉरेस्ट वाज नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में ये एज अ विलेज रजिस्टर्ड ही नहीं था फॉर सम रीजन. मे बी यहाँ पे सिर्फ 4 ही घर है. ओनली 4 विलेजेस आर देयर, 4 होम्स आर देयर. जस्ट 4 फैमिलीज रह रही है. तो दिस इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ विलेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड. सो दीज ऑल सच फॉरेस्ट विलेजेस दैट आर इन फॉरेस्ट, ओल्ड हैबिटेशंस, बहुत पुराने हैबिटेशन से पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, ट्राइबल पीपल्स स्पेशली. Unsurveyed villages means those villages which were not surveyed by government of India, and other villages in forest. All these were considered to be a revenue villages. What is the benefit? क्यों करे, क्यों किया, क्या फायदा हुआ? ठीक है, रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया, उससे फायदा क्या हुआ? See, whenever a village is recorded as a revenue village, it gets certain rights. Like for example, it will get primary health center, it will get a school, it will get some funding for the local bodies. जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होगी तो ग्राम पंचायत के लिए फंडिंग आएगी. Right. So all these, obviously when a village is recognized as a revenue village, it gets a lot of benefits from government of India. Therefore, this was a landmark decision to convert all the unsurveyed forest villages into revenue villages under the FRA. ठीक है. Moving ahead, next है right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which community have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. See what happened after the independence. Government of India came and said कि ये अभी forest है, this is declared as let's say national park. इसको हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है. एंड नाउ वी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज दिस फॉरेस्ट. हम इसे मैनेज करेंगे. यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट. बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर आर मेनी एरियाज इन दिस फॉरेस्ट. लेट्स से दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया वेयर देयर इज अ सैक्रेड ग्रुप. हमने सैक्रेड ग्रुप के कॉन्सेप्ट देखिए. सैक्रेड ग्रुप, हियर इज अ लेक. लेट्स से हियर इज अ लेक. यहाँ पे एक लेक है. हियर इज अ लेक which is considered as pious, which is considered as having some religious values for these tribal people. So they are conserving this sacred grove or this lake for thousands of years now. And suddenly government of India is coming and saying, no, we will conserve this. You can't conserve. So to reverse this particular thing, there was a provision in Forest Right Act where the right to protect, regenerate and conserve or manage any community forest resource, it might be some forest, it might be lake, it might be a tree, anything which the community have been traditionally protecting. जो community traditionally उसे protect कर रही थी, उसी को protect करने का right दे दिया गया. Next है right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity. Very very important. See, tribal peoples
are conserving the biodiversity, cultural diversity, and have the traditional knowledge related to the forest. They may have some knowledge related to the medicinal values of the plants, right? और अदरवाइज ऑल्सो रिसेंटली डू यू रिमेम्बर एक साउथ इंडिया से एक न्यूज आई थी अभी 8-10 दिन पहले की बात है कि द ट्राइबल पीपल शो द फॉरेस्ट ऑफिसर कि देर आर सर्टेन ट्रीज जो पानी स्टोर करके रखती है, आप अगर उसकी ट्रंक में थोड़ा सा ये करते हैं तो वहां से पूरा पानी निकलता है। यस और नो, न्यूज थी 8-10 दिन पहले, राइट? कोंडा रेड्डी ट्राइब, यस, थैंक यू कार्तिक। सो कोंडा रेड्डी ट्राइब है आंध्र प्रदेश की, कोंडा रेड्डी ट्राइब। So these tribals showed that there are certain trees which store the water. So ये क्या है? ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। अभी लेट्स से देयर इज सम कंपनी, मैं एक कंपनी खोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं आपको उस ट्री का जो पानी है वो बॉटल में बेचूंगा, 500 रुपए की बॉटल है मेरी, यू कैन परचेस इट फ्रॉम माई एंड। किया है ये, लोगों ने किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल है, जैसे कि देर आर सम ऑयल्स, कुछ ट्राइबल पीपल ऑयल बनाते हैं जो कि हाईली इफेक्टिव है, पीपल हैव कमर्शियलाइज्ड इट, right? This tribal knowledge is being commercialized. Now the problem is that we are not compensating tribal people for that, right? So by recognize the intellectual property right on this traditional knowledge, if I want to do anything like that, I will have to compensate the tribal people. मुझे उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, I will have to pay them. मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, अगर मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 2 रुपए ट्राइबल पीपल को देने पड़ेंगे, right? By recognizing the intellectual property rights. This same happened with Patanjali also. पतंजलि को पीछे पीछे फाइन किया गया था एंड उन्हें बताया गया था कि वो उत्तराखंड के कुछ ट्राइबल्स हैं या उत्तराखंड के लोकल पीपल हैं, दे हैड टू पे हेवी अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पीपल बिकॉज पतंजलि वाज यूजिंग अ नॉलेज ऑफ दोस ट्राइबल पीपल। गॉट इट? नेक्स्ट है rights of displaced community was also recognized. Displaced community means those communities which have migrated from one place to another place for some reason. Example है, let's say there are forests in Odisha. ओडिशा के फॉरेस्ट थे, यहाँ पे बड़े पैमाने में माइनिंग की गई, ऑब्वियसली ये जो लोकल पीपल है दे हैड टू माइग्रेट बिकॉज उनके एरिया में माइनिंग की गई, तो दीज आर द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज, सो देयर राइट्स वेर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट। द मैक्सिमम लिमिट फॉर रिकॉग्नाइजिंग राइट्स इन फॉरेस्ट लैंड इज 4 hectare. अ पर्सन कैन ओन मैक्सिमम 4 hectare लैंड इन फॉरेस्ट, याद रखना है, ठीक है? ट्राइबल पर्सन कैन ओन मैक्सिमम ऑफ 4 hectare लैंड। Rights over development activities. Permission of Gram Sabha is necessary for undertaking any development activities. What it means? Let's say this is a forest. Let's say they want government want to build a road in this forest. यहाँ पे रोड आपको बिल्ड करना है, यहाँ पे एक विलेज है फॉर एग्जाम्पल, तो इस विलेज की जो ग्राम पंचायत, इसकी जो बाउंड्री है, इससे विलेज ये रोड जा रहा है, देन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक permission of the Gram Sabha of this village before building this road. So Gram Sabha has been given a very pivotal role in ensuring that the developmental activities are in cognizance with their Gram Sabha. ठीक है? Very very important right, याद रखना है। Next है, this act is applicable to tribals as well as non-tribal forest dwelling communities. Very very important. बहुत लोगों को लगता है कि FRA is only for tribals, मैंने यहाँ पे भी क्लैरिफाई किया था, नाम में ही है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सो ट्राइब्स भी हैं एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी इसमें कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है, राइट्स कन्फर्ड अंडर द एक्ट शैल बी हेरिटेबल बट नॉट एलिएनेबल और ट्रांसफरेबल। व्हाट इट मींस? लेट्स से दिस इज अ पर्सन ए, दिस इज अ पर्सन ए हैव अ चाइल्ड जिसका नाम हम देते हैं ए डैश या ए प्लस इज अ son of A or daughter of A. Then let's say this person acts have a 2 hectare of land. ये 2 hectare of land ऑटोमेटिकली इस पर्सन को चली जाएगी, राइट? हेरिटेबल राइट। व्हाट इट मींस कि आपके पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी आपके सन को मिल जाएगी या डॉटर को मिल जाएगी, राइट? सो इसे बोलते हैं हेरिटेबल राइट। सो द ट्राइबल राइट्स जो भी हमने अभी डिस्कस किए, all these tribal rights are heritable, means they are passed on from one generation to the next generation. However, they are not alienable or transferable. What it means? This tribal, if I am not a tribal person, I don't live in a forest, if I want to purchase a land in a tribal area, can I purchase? No, I cannot. Why? Because this person don't have permission to sell or transfer this right that it has gotten from the forest right act. Got it? Not only land, it can be the right to collect the forest produce. तो एक ट्राइबल पर्सन है, दैट पर्सन कैन कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसका बच्चा भी कर सकता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट। कैन आई गो एंड
purchase that right to collect the forest produce? No, I cannot. That is what it means. It is similar to reservation. आप पकड़ो, reservation is heritable. कि let's say a person belongs to SC community, his or her daughter and son will also get the reservation. But can they sell that reservation right to someone else? Obviously not. So these rights are heritable but non-alienable or transferable. Next, this act played important role in strengthening local self-governance. How? By making sure that the permission of Gram Sabha is necessary in any developmental activities. ठीक है? So local self-governance यहाँ पे strengthen किया गया है. इसके लिए एक act भी आया था. पैसा एक्ट करके एक एक्ट आया था. पैसा एक्ट was specially for the local bodies in the tribal areas. ठीक है? पंचायत एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज एक्ट, समथिंग लाइक दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दैट. ठीक है? सो ये याद रखना है आपको. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी. सो देयर आर सम प्रोविजंस रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी के लिए rather than moving to the act, important act से पहले ये समझ लेते हैं कि there was an important convention on biodiversity which is called as convention on biodiversity. Very very important convention. CPD is the short form of this convention on biodiversity. It was opened for signature at Rio Earth Summit on 5th June 1992. This Rio Earth Summit is also called as United Nations Conference on Environment and Development, UNCED. You might have you might remember this summit. हमने ये देखा था CED. इसका ही नाम है रियो अर्थ समिट. इस समिट में देयर वर सम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस व्हिच वर साइंड. इसमें से एक हमने ऑलरेडी देखा है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है यस्टरडेज लेक्चर में. देन वी हैव डिस्कस्ड we have also discussed that apart from that, two other conventions were signed in UNCED, which were their convention on biodiversity. This is what we are discussing now. ठीक है? एंड इसके अलावा भी एक था जिसका नाम था UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. सो याद रखना है ये चीजें. दिस वर साइंड इन रियो अर्थ समिट, दैट इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED. ठीक है? इट इज अ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. इसके जो भी प्रोविजंस है, दोस प्रोविजंस आर लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज. सब पे नहीं है, जिन्होंने CBD साइन किया है उन सभी पे लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. इट रिकॉग्नाइजेस द सोवरेन राइट्स ऑफ स्टेट्स टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी कंट्री हैव सम बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड द कंट्री इज हैविंग अ सोवरेन राइट टू यूज देयर ओन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस. इसका एग्जांपल है हल्दी. देयर वाज अ टर्मरिक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं. सो टर्मरिक की एक बहुत फेमस केस हुई थी जो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने लड़ा था. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ टर्मरिक की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि यूएसए हैड अ पेटेंट रिगार्डिंग टर्मरिक. टर्मरिक की जो मेडिसिनल वैल्यूज है, यू नो दैट टर्मरिक इज कंसिडर्ड एज एंटीसेप्टिक वैल्यूज, राइट? सो टर्मरिक की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसमें अमेरिकन कुछ कंपनीज ने पेटेंट फाइल कर दिया था. अगेंस्ट दैट डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर फॉट द केस एंड वोन दैट केस. हमने वो केस जीती है. एंड टर्मरिक की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दोज आर विद द इंडिया राइट नाउ. सच काइंड ऑफ राइट्स आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है? इवन ऑन बासमती राइस, यस, सेम हैपेंड विद बासमती राइस. वी हैव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द बासमती राइस. ठीक है? CBD covers biodiversity at all levels. हमने देखा था biodiversity at 3 levels, right? कौन कौन से? Genetic diversity. It means diversity within a species. कि let's say human beings है, तो आप और मैं we have a genetic variation. So genetic diversity. Same हमने बासमती राइस का एग्जांपल देखा था. There are hundreds of species of rice. बासमती राइस है, काली मूछ है, and so many others. So that is a genetic resource. Then species diversity. Species diversity means diversity in the species. Dog, cow, lion, cheetah, all these are different species. So there are different species. And lastly, ecosystem diversity. It means different types of ecosystem. Estuary, then forest, then lakes, then rivers. All these are the ecosystem diversity. So CBD covers all diversity of three levels: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. It also covers biotechnology. Very very important. Biodiversity के context में biotechnology is also important because we know that if there is some modification in the living organisms that can create a havoc in the natural ecosystem. It can be an invasive species, right? जैसे कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है, there are conspiracy theories saying that coronavirus is a tailor-made virus by चाइना. कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और गलती से वो निकल गया, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, राइट ना?
द पॉइंट इज दैट डजंट मैटर वो सच है या नहीं है, बट द थिंग इज दैट बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. अगर आप इमेजिन करिए कि इफ देयर इज इवन 1% चांस की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच है, तो आप इमेजिन करिए कि एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हेवॉक क्रिएट हुआ दुनिया में, तो बायोटेक्नोलॉजी कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, राइट? सो biotechnology is also covered in convention on biodiversity. It is included in convention on biodiversity through something called as Cartagena protocol on biosafety. Very very important protocol. Cartagena protocol is about the handling of living modified organisms means living organisms which are modified by biotechnology. So how to handle them? There are certain rules and regulations regarding their handling. Those are given in Cartagena protocol on biosafety. Basically, by inclusion of this Cartagena protocol, CBD have also now included the biotechnological aspect of biodiversity. Moving ahead, what are the objectives of CBD? There are three objectives. First है conservation of biological diversity. Obviously नाम ही है CBD, नाम ही है conservation of biological diversity. So पहला objective है to conserve the biological diversity at all three levels. कौन कौन से three levels? Genetic level, species level and ecosystem level. Second है sustainable use of components of biological diversity. So there are many components of biological diversity. It can be plant resources, it can be animal resources, it can be the forest, it can be the ecosystem. So we need to use these resources sustainably. If you are going to a jungle safari, if you are going to a trek, make sure कि आप वहाँ पे कचरा करके नहीं आएंगे. I have seen it. I go to multiple treks and मैंने नोटिस किया है हर जगह पे ट्रेक पे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स के पैकेट, चॉकलेट के रैपर्स, मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं वहां पे घूमने जाते हैं और वहां पे कचरा करके आते हैं, राइट? सो दैट नीड्स टू बी स्टॉप. देयर नीड्स टू बी अ सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स. आप वो यूज कर, आप वहां पे रिक्रिएशन के लिए रह रहे हैं तो रिक्रिएशनल वैल्यू आपको मिल रही है. You need to be cognizant of that fact and you need to make sure that you are cognizantly sustainably using the biological resource. So that is the second objective of CBD. Third is fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources. So there are many genetic resources which are being utilized. So they need to be fair. There need to be a fair and equitable sharing of the benefits. Like for example है medicinal plants. So मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था पतंजलि का. So Patanjali is using some local medicinal plants, right? Earning profit from it and keeping it all to itself. It should not happen. That profit needs to be fairly and equitably shared with all the people who are the party to or who are stakeholders in it. Let's say there are tribal people जिनके knowledge की वजह से ये product बनाए. So that tribal people need to be shared the benefit of the genetic resources that are being used. ठीक है? नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द फंडिंग इज कमिंग. ये सारी चीजें करनी है, ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे. पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे फ्रॉम ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी. याद रखना, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इन रियो अर्थ समिट ऑफ 1992. याद है ना ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? इट वाज द फर्स्ट फंडिंग मैकेनिज्म दैट वी डिस्कस. इट इज फाइनेंसिंग, आपको याद होगा तो, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंसेस द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ. इसमें हमने 6 प्रॉब्लम देखे थे. क्या क्या देखे थे? क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. बायोडाइवर्सिटी के लिए फंड करता है सीबीडी को, ठीक है ना, सीबीडी को. देन इट ऑल्सो फंड्स यूएनसीसीडी, डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने के लिए भी फंड करता है. इसके अलावा इट फंड्स मिनावाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी. इट फंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल and it also funds the one more convention is there, Minamata, Montreal, and persistent organic components वाला जो है Stockholm Convention. Yes, Stockholm Convention, Stockholm Convention on POPs. So these are the 6 conventions or 6 places where global environment facility is a body which provides funding. सो ऑब्वियसली सीबीडी के लिए कौन फंड कर रहा है? फिर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. सो इस तरीके से आपको याद करना है. इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड. एक्टिव रिकॉल. आप अभी ग्रीन आपने ये पढ़ा कि सीबीडी इज फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी. तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अच्छा सीके सीबीडी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कब आया था? इट वाज देयर इन 1992. इससे कौन कौन को फंड किया जाता है ये सारा याद आना चाहिए. इसके अलावा भी आपको एडेप्टेशन फंड, वो जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है,
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एडेप्टेशन फंड एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो आपको जाके वो सारे पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको लॉस एंड डैमेजेस फंड भी रिवाइज कर लेना है, जो कि अभी रिसेंटली साइन हुआ है COP 28 में। पढ़ाई इस तरीके से होती है, जब आप इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म याद रखता है। आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, नहीं होता है। आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी लर्निंग इतनी सॉलिड होगी कि अगर कोई बंदा 4 बार पढ़ के आप जिसको जितना नॉलेज मिलेगा उसको आपको 2 बार में मिल जाएगा, राइट। सो बहुत लोग फ्लेक्स करते हैं कि मैंने 8 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म किया। भाई 10 दिन ले, बट अच्छे से कर। यस और नो। आपने लेट्स से आपने 10 दिन में मैंने फॉर एग्जांपल 8 दिन में लक्ष्मीकांत फिनिश किया, और आपने 10 दिन में किया। आपने बहुत अच्छे से किया, मैंने एकदम मस्त कर लिया कि हाँ ठीक है हो गया। दोनों ने टेस्ट दी, मुझे टेस्ट में 80 मार्क आए, आपको 100 मार्क आए। तो क्या मतलब क्या फायदा हुआ मैंने 2 दिन कम में फॉलो खत्म करके? आपके तो स्कोर ज्यादा आ गए ना। सो व्हाट यू शुड फोकस ऑन इज लर्निंग। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद इन इटसेल्फ। जैसे हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पढ़ी तो हमने सारे फंड्स एक बार रिवाइज कर ली। मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आप अगर लेट्स से आपने अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में ट्राइब्यूनल्स पढ़ रहे हैं, तो तब जाके आपने ग्रीन ट्राइब्यूनल भी पढ़ लिया, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इस तरीके से थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ेंगे तो आपका फायदा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द सबमिशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट्स। The submission of national report is mandatory obligation on parties to the international treaties, including CBD. So, for CBD, periodically, the national governments need to submit the report. So, a national government will need to submit some report on a periodic basis about the progress on CBD's provisions. So, CBD के regarding India को, for example, periodically एक report submit करना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं mandatory obligation to submit the national reports. Moving ahead, based on this Convention on Biodiversity, one act was passed in India, which is Biological Diversity Act of 2002. Very, very important act. It was enacted to give effect to the provisions of CBD. CBD के provisions को इंडिया में implement करने के लिए मैंने बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने कोई ट्रीटी साइन की, डजंट मीन वो ऑटोमेटिकली इंडिया में अप्लाई हो जाएंगी। फॉर इट टू अप्लाई इन इंडिया वी नीड टू पास सम लेजिस्लेशन। सो सच काइंड ऑफ लेजिस्लेशन is Biological Diversity Act, which was passed to give effect to the provisions of Convention on Biodiversity. Under this, National Biodiversity Authority was established as a statutory body. National Biological Authority का काम क्या है? To make sure that Biological Diversity Act is implemented. What are the objectives of Biological Diversity Act? पहला है conservation of biodiversity, sustainable use of components, and fair and equitable sharing. The objectives of the Convention on Biodiversity themselves are the objectives of Biological Diversity Act. ठीक है, there is a 3-tier regulatory structure for implementation of Biological Diversity Act. At national level, there is National Biodiversity Authority. State level पे State Biodiversity Boards, and local level पे Biodiversity Management Committees. All these are the statutory bodies. Statutory bodies. ठीक है, moving ahead, there are some. अच्छा, ये दिस इज ओवर। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का आपको बस इतना ही इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नाउ देयर आर सम मोर प्रोविजंस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर क्लास इज लिटिल डिफरेंट देन द बुक। बुक में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, हम थोड़े अलग स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो सब बायोडाइवर्सिटी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो मूविंग अहेड, बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड देयर आर सम मोर थिंग्स दैट यू शुड नो। यहाँ पे हमने देखा था कि Convention on Biological Diversity covers biotechnology, which was included through the Cartagena Protocol. Now, what is this Cartagena Protocol? So, Cartagena Protocol on Biosafety, it was a protocol to the Convention on Biodiversity. इस convention के under a protocol sign किया गया है, ठीक है। It is an international agreement which aims to ensure safe handling, transport, and use of living modified organisms. So, there are certain regulations regarding handling, transport, and use of the living modified organisms which are given in the Cartagena Protocol, right? So ये बायोसेफ्टी के कंसर्न्स क्यों जनरेट हुए? इट इज ड्यू टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट कैन हैव द एडवर्स इंपैक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल वाज अगेन अ प्रोटोकॉल टू द CBD। देखो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज अ कन्वेंशन, यहाँ पे लोग आके कुछ डिस्कशन किया, उसके लिए
बाद में कुछ प्रोटोकॉल भी साइन होते हैं, जैसे हमने देखा यूएनएफसीसी था, यूएनएफसीसी के अंडर देयर वाज अ कायोटो प्रोटोकॉल, देयर वाज अ पेरिस एग्रीमेंट, देयर वाज अ लेट्स से अभी सीओपी 28 में लॉस एंड डैमेजेस फंड, इसके अंडर सारे यूएनएफसीसी के अंडर है। सिमिलरली सीबीडी के अंडर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कार्डगेना प्रोटोकॉल, अलॉन्ग विद दैट नागोया प्रोटोकॉल इज आल्सो to the CBD, Nagoya Protocol to the Convention on Biodiversity. It aims at sharing the benefits arising from utilization of genetic resources in fair and equitable way. So Nagoya Protocol was basically signed to fulfill this third objective of the Convention on Biodiversity. Next day, IKE targets. IKE targets were adopted at CBD at Nagoya Conference. So Nagoya, अच्छा ये Nagoya Protocol है, ये है Nagoya Conference. So Nagoya Conference में IKE targets दिए गए थे. It is a short-term plan which provide 20 ambitious achievable targets, collectively known as IKE targets. So these targets are basically 20 targets for the conservation of biodiversity. बस इतना याद रखना है आपको, याद रखना है आईके टारगेट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, बस इतना याद रखना है. देन शर्म एल शेख डिक्लेरेशन वाज साइंड फॉर इन्वेस्टिंग इन बायोडाइवर्सिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट. सो इट वाज फॉर क्रिएटिंग द फंडिंग अवेयरनेस फॉर फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट. ठीक है, चलो, with this we are done with the important acts and international agreements related to the biodiversity. Now there are some management rules. See, ये rules हैं, तो इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं. आई विल सजेस्ट यू टू रीड इट योर सेल्फ. देर इज नथिंग टू टीच इन दिस. ठीक है, देर आर सम रूल्स रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, बायोमेडिकल वेस्ट, सी वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट. दीज आर गिवन इन लक्ष्मीकांत, दीज आर गिवन इन योर शंकर आईएएस, या फिर आप जस्ट गूगल भी कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन इंडिया, आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो एक बार आपको पढ़ लेने, कुछ भी नहीं है, बस कॉमन सेंस की चीजें एक बार पढ़ लेना. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सी, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन दी है. आपको क्या करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका ऐसा डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, एक बार पढ़ लेना है, फर्स्ट टाइम आपको पूरा पढ़ लेना है. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ऐसे एक शॉर्ट नोट बना लेनी है. आप देखो इतना बड़ा है, ये पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट्स लगेंगे, ये पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगेंगे. ठीक है ना, तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग होती है एक्चुअली. देखिए यहाँ पे इतना सारी चीजें, आई विल नॉट रीड इट फॉर यू, आप बाद में पढ़ लेना. लेकिन इसका जो क्रक्स है, क्रक्स क्या है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी मींस इट इज हैविंग सम एक्ट बाय विच इट इज मेड. सो ये एक्ट भी आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्ट लिखना चाहिए था एनी विच वे. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPM. ठीक है ना, अभी आपको एक्टिव रिकॉल करना है, अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको जाके WPA में कौन कौन सी बॉडीज आती है वो सारी पढ़ लेनी. स्टैट्यूटरी, देयर आर अ लॉट मेनी स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर WPA, राइट? यस और नो? बहुत सारी बॉडीज है. कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व मैनेजमेंट कम्युनिटी, कंजर्वेशन फॉरेस्ट रिजर्व मैनेजमेंट कम्युनिटी, देन नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, राइट, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, then there is National Tiger Conservation Authority. So all these are the statutory bodies under Wildlife Protection Act of 1972. इसमें एक और ऐड हो गई Wildlife Crime Control Bureau. It is a statutory body and it is a multidisciplinary body. Multidisciplinary means obviously आपको wildlife crime control करना है. So there needs to be different stakeholder. इसमें पुलिस आएंगे, इसमें कस्टम्स के ऑफिसर आएंगे, इसमें इकोनॉमिक्स ऑफेंस आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है तो इट इज फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, राइट. देन इसमें सीबीआई आएंगी, इसमें डिफरेंट स्टेट के पुलिस आएंगे, महाराष्ट्र पुलिस आएंगी, कर्नाटका पुलिस आएंगी, जम्मू कश्मीर पुलिस आएंगी, राइट. सो डिफरेंट स्टेट के पुलिस आएंगी. देन देयर विल बी मेनी अदर एनवायरमेंट की कुछ अथॉरिटीज आएंगी, फॉरेस्ट की कुछ अथॉरिटीज आएगी. सो इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट अथॉरिटीज टू कंट्रोल द क्राइम इन वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है, आई एम सॉरी, वाइल्ड लाइफ मुझे लगा लिखा नहीं था. Statutory body under WPA 1972. It is already mentioned. It is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन कंट्री. ठीक है, यहाँ पे पढ़ो आप. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द ऑन 6 जून अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ एक्ट completely efforts to state government primary enforcement of wildlife protection act and other enforcement measures. देखो, it would complement the efforts of state government प्राइमरी एनफोर्सर्स ऑफ एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसी. इतने सारे लोग हैं, मतलब क्या है, इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी बॉडी. इतने सारे में क्या दिया है, दो चीजें दी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, मल्टीडिसिप्लिनरी. सो ये पूरा पैराग्राफ 2 वर्ड में समराइज हो गया. फंक्शंस क्या है?
collection, collation, intelligence and dissemination, establishment of central wildlife crime data bank. कॉमन सेंस की बात है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कर रहे हो तो एक वाइल्ड लाइफ का डेटा बैंक बनाया. कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस, implementations of the international conventions, right, related to the wildlife crime. असिस्टेंट फॉरेन कंट्रीज को असिस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ क्राइम के रिगार्डिंग एडवाइस करना. सो सारी कॉमन सेंस की चीजें. सो यू जस्ट नीड टू नो द ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस इन अ कॉमन सेंसिकल टर्म्स. यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दिस फंक्शंस. ठीक है, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको, इसलिए बस एक बार पढ़ के इसे शॉर्ट नोट बना लेनी है. ओके गाइस, देन वी विल एंड आवर सेशन विद दिस. थैंक यू.